Hello students, today we will read history. As you all know, our first and second chapter have already completed in history. So today we will start the third chapter, and the third chapter is the Delhi Sultans. As the title denotes, in this chapter we are going to read about the Sultans of Delhi and when the Delhi become an important city. So let's start the chapter. In the previous chapter, you have read that Kaveri Delta in 11th century was the center of large kingdom, but there is no mention of Delhi as a capital, as a kingdom that time. But in 12th century, Delhi became an important city. First, Delhi became the capital of Taimur Rajput, but Taimur Rajput was defeated by the Chauhans of Ajmer. And under Tomars and Chauhans, Delhi became an important commercial center, and many rich merchants lived in Delhi and constructed many temples here. That time coins also minted in Delhi, and the coins which minted in Delhi are called Dehliwal. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. Now we look on a table which tells us about the dynasties who ruled on Delhi, and this is the table. There are many dynasties in this table who ruled on Delhi. So let's read about these dynasty. First, Rajput dynasty, and the famous ruler of this dynasty was Tomar and Chauhan Rajputs, and they ruled on Delhi 1130 to 1192. Second dynasty is a Turkish dynasty, and the famous ruler of this dynasty was Ghayasuddin, Balban, Kutubuddin Aibak, Samshuddin Iltutmish, and Razia Sultan. They ruled on Delhi 1206 to 1287. The next dynasty is Khilji dynasty, and the ruler of this dynasty was Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji, and they ruled on Delhi 1290 to 1316. Next, Tughlaq dynasty. Ghayasuddin Tughlaq, Muhammad Tughlaq, and Firoz Shah Tughlaq was the famous king of this dynasty, and they ruled on Delhi 1320 to 1388. Next, Sayyid dynasty, and the famous ruler of this dynasty was Khiz Khan, who ruled on Delhi 1414 to 1421. And the last dynasty was Lodi dynasty, and Behlol Lodi was the first sultan of this dynasty, and the last sultan of this dynasty was Ibrahim Lodi, who fought a war against Babur in 1526 in Panipat, but he was defeated by Babur, and after that Babur took the foundation of Mughal dynasty in India. Now we will read about the inscription, coins, architecture, who provide a lot of information, especially valuable histories like Tariq and Twarik. Tariq is used for singular and Twarik is used for plural, and it is written in Persian language, a language of administration under the Delhi Sultan. And there are 4 pictures on page number 32, A, B, C, D, and the 4 pictures are showing us different works in these picture. In picture A, a person is preparing the paper. In picture B, a person is writing the text. In picture C, a person is melting gold to highlighted important words and passages. And in picture D, a person is preparing the binding of a book. It means these pictures are showing us that how the paper make that time, how the scribes or manuscript written that time, और बुक्स की बाइंडिंग कैसे की गई. तो दीज पिक्चर्स आर शोइंग अस दीज थिंग्स. एंड द ऑथर ऑफ त्वारिक वर लर्नड मैन. इट मीन्स द ऑथर ऑफ दैट टाइम वॉज द पर्सन हु नो हाउ टू राइट एंड रीड. Instead of these secretaries, administrators, poets or courtiers also advise ruler to governance and the important rule of their kingdom. The author of Tariq lived in cities mainly in Delhi, and they were not live that time in villages. And the authors of the histories wrote for the Sultan in the hope of rich rewards, and these authors advise rulers on the need to preserve an idea
social order based on birthright and gender discrimination. Now I am telling you about the birthright and gender discrimination. Birthright means privileged claimed on account of birth. For example, a people believed that nobles inherited their rights to govern because they were born in a certain फैमिली. इट मीन्स एक तरह का इम्पोर्टेंस या एक तरह का स्पेशल राइट उन्हीं पर्सनस को मिलता था जो किसी रॉयल फैमिली में बोर्न होते थे. इट मीन्स द सन ऑफ द किंग विल बी द फ्यूचर किंग. दिस इज कॉल्ड बर्थ राइट. नेक्स्ट I will tell you about the gender distinction. In 1236, Sultan Iltutmish daughter Razia became the Sultan, and the famous historian of that time, Minhaj Siraj, recognized that she was more able and qualified than her brothers. But he was not comfortable at having a queen as a ruler because the nobles of her court was not happy with her and they want their rule independently. So she was removed from the throne in 1240. This is called gender distinctions. It means socially and biologically differences between women and men. Usually these differences are used to argue that men are superior than women. It means men have more importance than a women. So ये जेंडर डिस्टिंक्शन जो है ये पुराने टाइम से ही हमारी सोसाइटी में है और आज भी इसको फॉलो किया जा रहा है. नाउ वी विल रीड अबाउट फ्रॉम द गैरिसन टाउन टू एम्पायर एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ. 13th century, in the 13th century the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. garrisons means होता है एक fortified settlement और उसके साथ साथ वहाँ सोल्जर्स को भी अपॉइंट किया जाए उसकी टेक केयर करने के लिए. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड्स. इसके अलावा दैट टाइम जो भी सुल्तान्स थे उन्होंने हिंटरलैंड्स को भी सिटीज़ के अपने कंट्रोल में किया क्योंकि वो लोग डिपेंड थे ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए और जो प्लेंडर्स थे उनसे अपने सामान की सप्लाई को बचाने के लिए. हिंटरलैंड मीन्स होता है वो प्लेस जो वो सिटी जो किसी पोर्ट से अटैच हो और जहाँ से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को इजीली किया जा सके. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. बहुत लंबा एरिया हो जाता था बंगाल से लेके सिंध तक और दिल्ली के किंग का दिल्ली में रहते हुए इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल करना दैट टाइम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज दैट टाइम वॉज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. रिबेलियंस होते थे, वॉर्स होती थी और उस टाइम पे कम्युनिकेशन भी स्नैप हो जाता था. Delhi authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan weakness. It means that time the small kingdoms, the small kings and the king of the other country was in search of the weakness of the Sultan कि वो कैसे उनकी weakness को का पता करे और उन पर कैसे attack करे. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of गयासुद्दीन बलबन, फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. तो इस दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन तो स्टार्ट कर दिया था गयासुद्दीन बलबन ने बट बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने भी उसे कंटिन्यू रखा. फर्स्ट दीज किंग्स कंपेन अलोंग द इंटीरियर फ्रंटियर्स. इट मीन्स इन्होंने अपनी आंतरिक सीमाओं को अंदर के एरियाओं को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया. अपने हिंटरलैंड्स को, गैरिसन टाउन्स को कॉन्सिडलेट करना स्टार्ट किया. आफ्टर दैट दे स्टार्ट कैंपेन इन फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा एंड यमुना दोआब एंड hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitats. hunter gatherers मीन्स जो ग्रुप में रह के एनिमल्स को हंट करते हैं और पेस्ट्रोलिस्ट मीन्स जो एनिमल्स को पालते हैं, पशुपालक होते हैं, उन्हें इन फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया. These land were given to peasants and agriculture was encouraged. Now, fortress, garrison town and towns were established to protect trade routes and promote regional trades. The second expansion occurred along the internal frontier. पहले एक्सटर्नल फ्रंटियर को इम्पोर्टेंस दी और दैट इन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर को भी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया. Military expedition into the southern India started during the reign of Alauddin Khilji.
एंड कल्मिनेटेड विद मुहम्मद तुगलक, और ये मुहम्मद तुगलक के टाइम तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन देयर कैंपेन सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्स, स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। By the end of Muhammad Tughlaq reign, 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi subcontinent, Delhi sultans had marched across a large part of the subcontinent, and they had defeated rival armies. It means इनके जो rivals थे, इनके जो दुश्मन थे, उन्हें इन्होंने डिफीट कर दिया। और दिल्ली सुल्तान ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया उस टाइम के पीसेंट से अपने एरियाज़ के अंदर, और बहुत सारी ऐसी इफ़ेक्टिव वर्क इन्होंने स्टार्ट कर दिए जिससे ये अपनी टेरिटरी को और भी वास्ट कर सके, इस एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सके। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मस्जिद, एंड वी विल रीड अबाउट दिस पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।